U.S. administration in Washington is solely and fully responsible for the dangerous consequences and far-reaching implications of its act of aggression. The U.S. military attack on the territorial integrity and national sovereignty of a UN member state carried out with genocidal Israeli regime, carried out in collusion with the genocidal Israeli regime, has once again revealed the extent of the United States' hostility towards the peace-seeking people of Iran, who will never compromise over their independence and sovereignty. The Islamic Republic of Iran continues to defend Iran's territory, sovereignty, security, and people by all means necessary against not just U.S. military aggression, but also the reckless and unlawful actions of the Israeli regime. While President Trump was elected on a platform of putting an end to America's costly involvement of forever wars in our part of the world, he has betrayed not only Iran by abusing our commitment to diplomacy, but also deceived his own voters by submitting to the wishes of a wanted war criminal who has grown accustomed to exploiting the lives and wealth of American citizens to further the Israeli regime's objectives. The U.S. act of aggression against Iran's peaceful nuclear facilities constitutes not only a flagrant breach of the UN Charter, especially the prohibition of the use of force under Article 2, Paragraph 4, and the obligation to respect the state's territorial integrity and sovereignty, but also a violation of UN Security Council Resolution 2231. It cannot be emphasized enough how much of a devastating blow that the U.S., a permanent member of the Security Council, has dealt to the global non-proliferation regime. The Islamic Republic of Iran reminds the United Nations, the Security Council, the UN Secretary General, the International Atomic Energy Agency, and other relevant international bodies of their duty and responsibility to take urgent and decisive action in response to this breach of international law. Silence in the face of such blatant aggression will plunge the world into an unprecedented level of danger and chaos. Humanity has come too far as a species to allow a lawless bully to take us back to the law of the jungle. The Islamic Republic of Iran calls on the Security Council to convene an emergency session to unequivocally condemn the criminal act of aggression by the United States against Iran and to hold the administration in Washington accountable for its violations of fundamental principles of United Nations Charter and of norms of international law. The responsibility of the IAEA and its Director General, who through evident bias in favor of warmongering parties paved the way for the current violence and bloodshed, is now clearer than ever. We call on the IAEA Board of Governors to immediately convene and carry out its legal responsibility in response to the dangerous U.S. attack on Iran's peaceful nuclear facilities, all of which have been under the agency's full safeguards and monitoring. The world must not forget that it was the United States which, in the midst of a process to forge a diplomatic outcome, betrayed diplomacy by supporting the genocidal Israeli regime's launch of an illegal war of aggression on the Iranian nation. Not content with such malign actions, the United States itself has now also opted for a dangerous military operation and aggression against the people of Iran. In doing so,
The US administration holds sole and full responsibility for the consequences of its actions, including the Islamic Republic of Iran's right to self-defense under the principles of the United Charter. In accordance with the UN Charter and its provisions allowing a legitimate response in self-defense, Iran reserves all options to defend its security interests and people. Thank you very much. We will now be taking questions. We'd like to start with the Associated Press. Whoever can. Sayın Bakan, müzakere kapıları hala açık mı görüyorsunuz? Tamam. Şimdi ses geliyor mu? Sayın Bakan, müzakere hala kapıyı açık mı görüyorsunuz? Hadi değil mi? No translation. Interpreter, please speak. Bakan Arapça biliyor mu? Direkt Arapça. If I may just step in here and just translate real quick for my colleague. He's asking if there are still room for negotiations moving forward. Arapça olarak diye sorabilirim eğer Arapça biliyorsa. It's all right now. You can translate is okay. Türkçe mi? Sayın Bakan, Ahmet Gannam Minnet Televizyon Arabi, müzakerelere hala kapı açık mı görüyorsunuz? Tahran'la görüşmüş müydünüz? Bugün nükleer tesislere vurulan nükleer tesislere ne kadar yüzde kaç bir zarar görmüştür? Arabuluculuk yapan bir ülke var mı? Görüştüğünüz bölgedeki ülkelerle, Türkiye, Suudi Arabistan, Katar gibi ülkelerle görüşüyor musunuz? Arabuluculuk devam ediyor mu, devam etmiyor mu? Nasıl görüyorsunuz bu süreci? Teşekkür ederiz. Well, I have been in touch with Tehran, of course. I still do not have exact information about the level of damages, but I don't think it matters how much damages have been made. Attacking a nuclear facility by itself is an unforgivable violation of international law and should be condemned. Yesterday, as I said, I had discussion and talks with a number of foreign ministers of the region. Almost all of them are very much concerned and interested to play a role to end this aggression by Israel, of course. They were worried about a possible attack by the United States, but yesterday we were all talking about how to stop the Israeli aggression. Well, of course, the door for diplomacy should be always keep open, but this is not the case right now. My country has been under attack, under aggression, and we have to respond based on our legitimate right of self-defense. And we will do that as long as needed and necessary. We'd now like to take a question from Al Jazeera.
Ses. Thank you very much, Minister. So you say that you need to respond right now, but we know that Iranians are known for their talents in negotiations, in diplomacy and trade. What would be the conditions after responding for Iran to come back to a negotiation table, maybe with the US as well? And Turkey has been offering that Ankara can mediate for a trilateral between Turkey, US, and Iran. What would be your response to that? Because right now the US is technically involved in this conflict. Thank you. Well, I think it is irrelevant to ask Iran to return to diplomacy, because we were in the middle of diplomacy. We were in the middle of talks with the United States when Israelis blew it up. And again, we were in the middle of talks and negotiation with Europeans, happened only 2 days ago in Geneva, when this time Americans decided to blow it up. So we were in diplomacy, but we were attacked militarily. So it was not Iran, but the US who betrayed diplomacy. They betrayed negotiations. When at the middle of negotiations with us, they gave green light to Israelis, if not instructed them to attack Iran's nuclear facilities. I think they have proved that they are not men of diplomacy, and they only understand the language of threat and force. And this is very unfortunate. The United States showed that they have no respect to United Nations Charter. They have no respect to international law. They have no respect to any international law regarding, managing the world and facing challenges of the world. There is no red line that they have not crossed. And the last one, and the most dangerous one, happened only last night, when they crossed a very big red line by attacking nuclear facilities. I don't know how much room is left for diplomacy. We are now calculating the damages. And as I said, the damages are not only for our nuclear facilities, the damages are for the United Nations Charter. It was not only Iran's facilities which was bombed, it was also the United Nations Charter. It was also non-proliferation regime and NPT, which was bombed last night by Americans. And it was the rule of law and international law which was bombed. So now we have to see how much room is left for diplomacy, and we will decide. I'd like to hand over to TRT World. Mr. Minister, the U.S. President Donald Trump warned that Iran must now make peace, otherwise the future attacks, he says, would be far greater and much easier. So how is Tehran responding to death threats from Washington? Thank you. I think it's not up to Iran to respond to that. The whole international community should respond of such a clear threat against the United Nations Charter. Iran has done nothing wrong. We do not understand why Iran should be attacked for a false accusation that Iran is seeking nuclear weapons. It's now more than 20 years
that we are trying to prove that our peaceful nuclear program is in fact peaceful and would remain peaceful. We negotiated for a long time with the so-called P5+1, and we came to a deal which the whole world celebrated as an achievement of diplomacy. And then it was the US who withdrew from that deal and reimposed their sanctions and restarted their threats. Again, we were negotiating with the same administration. Then all of a sudden they decided to attack us, first by Israelis, then by themselves. And now they are threatening us for more attacks. So it's not up to Iran, but it's up to the international community to condemn this, to prevent this. Otherwise, there would be nothing left for the international law, for the security at the world level. The Security Council should play its role, should play its responsibility to condemn and prevent these kind of threats. We will certainly defend our interests. We will certainly defend our territorial integrity, our sovereignty, and our people. And I'm so glad that our people are now fully understand what injustice they are doing against the Iranian people. They are united and in solidarity with the government, and we stand firm against any aggression. Next, CNN Turk. Mr. Minister, how do you assess the West's stance on Israel massacres? No one seems to mention Israel's allegedly illegal nuclear weapons. The German Chancellor even said Israel is doing the dirty work for us. So what is your response? Thank you. Well, what should I say? You said everything. That Iran is under attack by a nuclear-armed superpower and a nuclear-armed regime. And Iran, as you know, is a non-nuclear-armed country. That should be certainly condemned. If not, the whole non-proliferation regime would be undermined and would be defeated. Iran is a committed member of NPT, but NPT is not able to protect us. So why a country like Iran or other countries who are interested to have a peaceful nuclear energy should rely on NPT for their peaceful activities? It is very unfortunate that Israel is doing, as the German Chancellor called, a dirty job. And by the way, they supported that dirty job. It's a shame. They know that Israel is doing a dirty job and they support it, and they give it every right to do it, and they call it defending itself. It's really a shame. Pardon? Well, I think I'm not in a position to reveal what we are going to do in response to what Americans did last night. I just talked about the fact that NPT failed to protect Iran from and its peaceful nuclear program, and this is a serious challenge. Next, we'd like to take a question from IRIB.
IRIB, if I can get a question from IRIB. Yılmaz Parlar, Türker Gazete, Türkiye Cumhuriyeti'nden çıkan gazete, bir de Net Haber Ajans. Sayın Bakan, Çin'in İran'a destek verdiği söyleniyor. Bu konuda Amerika ve İsrail'in tarafından caydırıcı olmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir de Rusya ile olan ilişkiler, münasebetleri, beklentilerinizi öğrenebilir miyim? Teşekkür ediyorum. Well, there was a problem with the translation, or I think with the device, it doesn't work properly. I understood the last part of your question. Well, I'm going to Moscow this afternoon, and I have a meeting with President Putin tomorrow morning. Russia is a friend of Iran, and we enjoy a strategic partnership, and we always consult with each other and coordinate our positions. Russia has been a part and the participants of JCPOA, so they have been always a party to nuclear negotiations. And even in the past 2-3 months that we were negotiating with the United States, we always briefed our Russian friends about the latest about any progress or lack of progress in our talks. Well, I will have serious consultations with the Russian president tomorrow, and we continue to work with each other. Russia is also a permanent member of the Security Council, and we know that they were trying, together with China, to introduce a resolution to the Security Council for the cessation of hostilities. Obviously, now the situation has been changed, and I will have discussion with them that how it should be proceed. The final question from IRIB, if we can hand over the microphone to the gentleman right there. Thank you. خسته نباشید آقای عراقچی. از خدمتتون که دیروز آقای اردوغان صحبت‌هایی داشتن در مورد میانجیگری، فکر می‌کنید نقش ترکیه در این رابطه به چه ترتیب خواهد بود؟ میتونه ترکیه در واقع در این رابطه نقشی ایفا بکنه برای حل این مسائل و سرگیری دیپلماسی، یا فکر می‌کنید که بی‌ثمر باشه؟ من دیروز ملاقات بسیار خوبی رو با جناب آقای اردوغان رئیس جمهور محترم ترکیه داشتم. هم ترکیه و هم برخی کشورهای دیگه در منطقه خواهان ایفای نقش مثبت برای خاتمه تجاوزات رژیم صهیونیستی به ایران بودند و من اطمینان دارم که از امروز هم تلاش‌های جدیدی رو شاید شروع بکنن برای جلوگیری از ادامه مخاصمه توسط آمریکا. ترکیه با قاطعیت حملات اسرائیل رو محکوم کرد. کشورهای دیگه منطقه هم همینطور. الان یک محکومیت جامع در کل منطقه و بین کشورهای اسلامی وجود داره در محکومیت جنایات اسرائیل. ما دیروز یک جلسه خاص تجاوز اسرائیل به ایران رو در نشست وزرای امور خارجه کشورهای اسلامی داشتیم که جلسه بسیار خوبی بود. کشورهای متعددی در این جلسه صحبت کردند، از جمله ترکیه که ریاست جلسه رو هم به عهده داشت، در محکومیت جنایات اسرائیل و در ضرورت توقف این تهاجم و از جمهوری اسلامی ایران حمایت کردند. حمله دیشب یک جنایت بسیار بزرگ بود، نه فقط علیه ملت ایران بلکه علیه
منشور ملل متحد علیه تمامی قوانین و مقررات بین الملل، علیه نظام عدم اشاعه و آمریکا با این کار خودش ضربه بسیار بزرگی رو به صلح و امنیت بین الملل زد. به اعتقاد ما آنچه که شورای امنیت و جامعه بین الملل باید باهاش به عنوان تهدید علیه صلح و امنیت بین الملل برخورد بکنه دقیقاً رفتار آمریکاست که هم نظام بین الملل رو به چالش کشیده و هم منطقه ما رو به سمت تنش و آشوب پیش میبره و این بسیار خطرناک است. حمله دیشب آمریکا نشان داد که اسرائیل، رژیم صهیونیستی در رسیدن به اهداف خودش در ایران ناکام مانده و برعکس به خاطر صدماتی که متحمل شده در اثر دفاع قهرمانان نیروهای مسلح ایران در شرایط بحران قرار گرفته و چاره‌ای جز این که از آمریکا کمک بخواد نداشته و دخالت آمریکا دقیقاً برای نجات رژیم صهیونیستی یا بهتره بگیم نجات نخست وزیر این رژیم صورت گرفت و اینکه چقدر کاخ سفید تحت تأثیر شخص نتانیاهو قرار داره باید باعث تأسف و خجالت برای کل مردم آمریکا باشه. ما به دفاع قهرمانانه خودمون ادامه خواهیم داد. نیروهای مسلح ما در آمادگی کامل قرار دارند. مردم ما با اعتماد به نفس و روحیه بالا هستند. غرور ملی ایران جریحه‌دار شده. غرور ملی ایرانیان خدشه‌دار شده و ما هرگز از حقوق و منافع خودمون و عزت خودمون و حیثیت خودمون کوتاه نخواهیم آمد. از توجه شما بسیار متشکرم. We do have time for one or two more questions. I'd like to hand over to Bloomberg Haberturk. Mr. Minister, thank you very much for doing this. And I'll come from Haberturk and Bloomberg HT. You said attacks at nuclear facilities are red line and you are calculating your response. So here is the question. What are the options? Are you going to retaliate at US bases in the region or are you going to considering to close the Strait of Hormuz? And one more question as well. 2 times while you are at the table of negotiation, Israel and US attacked your soil. So do you still have the same level of trust to Western diplomacy? Thank you. There are a variety of options available to us, and that's it. We never trusted Western countries when we negotiated them, and there are now even more reasons why we shouldn't trust them at all. Of course, the way for diplomacy should be always remain open, but as I said, we are not in the situation right now to decide how to engage in diplomacy once again and with whom. So let's wait for our response first, and when the aggression is ended, we decide how to engage in diplomacy once again. Next, over to NTV. Mr. Minister, thank you. I would like to ask a quick question. You had many dialogues with Mr. Steve Witkoff, the U.S. representative, during the negotiations.
Did he call you after the attack? Who you talk with? Did you ever talk with any Western countries or United States? Did they call you? Thank you. Well, my talks with Mr. Witkoff was indirect through the Omani foreign minister as intermediator, to whom I'm very grateful. And when the talks were stopped because of the US aggression, we are still receiving messages from Americans through different channels, Oman in particular, and there are also others who are passing the messages of the United States to us. And if needed, we respond to those messages through intermediators. Well, thank you very much, everybody. I think we are done. Yes, we've come to the end of that press briefing. We'd like to thank the foreign minister for holding that briefing after the latest developments in his country, Iran, and in the wider Middle East region. Thank you very much. Thank you, everybody. Thank you. हम अपनी खुद मुख्तारी पर कभी समझौता नहीं करेंगे। अमेरिका को जवाब दिया जाएगा। दुनिया को भूलना नहीं चाहिए कि अमेरिका था जिसने सिफारतकारी से इनकार किया। अमेरिका ने ईरानी अवाम के खिलाफ खतरनाक अस्करी कार्रवाई का इर्तिकाब किया है। अब नताइज की जिम्मेदारी अमेरिका पर होगी। ईरान के वजीर खारजा अब्बास अरगची की गुज़िश्ता रोज के अमेरिकी हमलों के बाद अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस अब से कुछ देर पहले ईरानी मीडिया की जानिब से नशर की गई, जिसमें उन्होंने अमेरिका को सख्त नताइज की वार्निंग दी है, खबरदार किया है। उनका कहना है कि ईरान को सिफारतकारी की तरफ आने का कहना बेमानी है। अमेरिका ने दिखाया कि उनकी नज़र में अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर, बैनुल-अक़वामी कानून की क्या अहमियत है। अब्बास अरग़ची ने कहा कि ईरान ने दरख्वास्त की है कि फौरी सलामती काउंसिल का इजलास बुलाया जाए और उस इजलास में इस मुद्दे को उठाया जाए, इस बात को उठाया जाए कि किस तरह अमेरिका ने ईरान पर हमला करके बैनुल-अक़वामी क़वानीन की, अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की संगीन तरीन खिलाफ वर्जियाँ की हैं। NPT ईरान के पुरअमन न्यूक्लियर प्रोग्राम के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम हो गई। उन्होंने बताया कि आज शाम मॉस्को जा रहे हैं, सदर पुतिन से मुलाकात करेंगे। याद रहे कि 3 रोज कबल रूस के सदर पुतिन ने कहा था कि ईरान ने अब तक हमसे मदद नहीं मांगी। तो अब ये बता रहे हैं अब्बास अरग़ची कि आज शाम वो मॉस्को जा रहे हैं जहां सदर पुतिन से मुलाकात होगी। अमेरिका ने ईरान की जौहरी तंसीबात पर हमला करके बड़ी रेड लाइन क्रॉस की है, ये कहना था ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरग़ची का। उन्होंने कहा कि हम अपनी आज़ादी और खुद मुख्तारी पर कभी समझौता नहीं करेंगे। अमेरिका ने ईरान पर हमला करके संगीन गलती की है और उसे इस गलती का जवाब दिया जाएगा। अमेरिका सलामती काउंसिल का मुस्तकिल रुकन है, उसने ही आलमी अमन को नुकसान पहुंचाया है। एक मुख्तसर ब्रेक, जिसके बाद हाजिर होते हैं हेडलाइंस के साथ। ये रॉयल रूम कूलर है, जेल आइस पैक्स की वजह से मिले एसी जैसी ठंडक और एयर फ्रेशनर दे खुशबूदार हवा। रॉयल रूम कूलर, खुशबूदार ठंडक हर पहर। By smooth, moisturizing, glowing skin naturally. You Naturals hair removing cream. अब रहे beautiful naturally. पेंट के पैसे देंगे तो बचत तो होगी। मास्टर पेंट लगवाएं और टोकन के इजाफी खर्चे से छुटकारा पाएं। पेंट के पैसे दो, टोकन के नहीं। जियो न्यूज क्लॉक के लिए ताउन किया है हेयर वॉश शैम्पू हेयर कलर, जो बनाए हेयर कलरिंग शैम्पू जितना आसान। हेयर वॉश शैम्पू हेयर कलर। जियो हेडलाइन न्यूज के लिए ताउन किया है। इन सीपीओ के 2 स्प्रे से मिले आपकी फसल को तने की सुंडी और पत्ता लपेट सुंडी से मुकम्मल निजात।
ईरान की जौहरी तंसीबात पर अमरीकी हमले के बाद ईरान का सख्त रद्द-ए-अमल। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरग़ची ने अमरीका पर वाज़ेह किया कि जवाब देने का हक महफूज रखते हैं और जवाब देंगे। इस्तांबुल में प्रेस कॉन्फ्रेंस, ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, मौजूदा सूरत हाल में ईरान से सिफारतकारी की तरफ वापसी का मुतालबा करना बेमानी है। दुनिया को नहीं भूलना चाहिए कि अमरीका ने अमन मुज़ाकरात के दौरान हमला करके सिफारतकारी को कत्ल किया। अमरीका ने दिखाया कि वो बैनुल अक़वामी क़वानीन का कोई एहतराम नहीं करता। सलामती काउंसिल के मुस्तक़िल रुकन नहीं आलमी अमन को नुकसान पहुंचाया। ट्रंप इस वादे पर इंतखाब जीते कि वो मशरिक़ वस्ता समेत दुनिया भर में जंगों में हिस्सा नहीं लेंगे। उन्होंने न सिर्फ ईरान बल्कि अपने कौम को भी धोखा दिया। अब्बास अरग़ची का बैनुल अक़वामी एटमी अदम फैलाव की तंजीम से फौरी तहक़ीक़ात, सलामती काउंसिल और IAEA से फौरी इजलास बुलाने का मुतालबा। ईरान का रूसी सदर पुतिन से भी मुशावरत का ऐलान। A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime: Fordow, Natanz, and Esfahan. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. ईरान की जौहरी तंसीबात पर हमला करके अमेरिका भी इसराइल की जंग में शामिल हो गया। अमेरिका की फर्दो, नेतन्स और एस्फहान जौहरी तंसीबात पर बमबारी। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक फर्दो जौहरी साइट पर हमले में 6 B-2 बमबार तैयारों ने 12 बंकर बस्टर बॉम्ब गिराए। दीगर ईरानी जौहरी साइट्स पर हमले में 30 टोमोहॉक मिसाइल इस्तेमाल किए गए। ईरानी एटमी तवानाई इदारे ने फर्दो, नेतन्स और एस्फहान जौहरी साइट्स पर हमले की तस्दीक कर दी। जौहरी तंसीबात पर अमरीकी बमबारी के बाद ईरान का इसराइल पर मिसाइलों और ड्रोन से ताज़ा हमला। इसराइली मिसाइल दिफाई निज़ाम मुतादिद ईरानी मिसाइल न रोक सका। मिसाइल हमलों से तल अवीव और हाइफा में तबाही, 87 अफराद जख्मी, मुतादिद अफराद के अब भी मलबे तले दबे होने का खदशा। ईरानी पासदारान इनकलाब का कहना है कि हमला सबसे कामयाब रहा। 14 फौजी अहदाफ निशाने बनाए गए। हमले में तल अवीव के बिन गौरियन एयरपोर्ट और हयातियाती तहकीकी मरकज, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को निशाना बनाया गया। तर्जुमान पासदारान इनकलाब का कहना है कि पहली बार खैबर शिकन मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। अभी मजीद खतरनाक मिसाइल इस्तेमाल होना बाकी है। ईरानी मीडिया के मुताबिक खैबर शिकन मिसाइल तकरीबन 1500 किलोमीटर तक मार करने की सलाहियत रखता है। इसराइल की जानिब से मिसाइल हमलों के असरात छुपाने की कोशिश। इसराइली अखबार में गैर मुल्की सहाफियों को रोक टोक की तस्दीक कर दी। अमेरिकी सदर की ईरान को रद्द अमल की सूरत में मजीद मोहलिक हमलों की धमकी। ट्रंप ने कहा, अब या तो अमन होगा या फिर ईरान के लिए सानिहा होगा। बहुत से अहदाफ रह गए, अमन ना हुआ तो दुरुस्ती के साथ दीगर अहदाफ के पीछे जाएंगे। आइंदा हमले मजीद सख्त होंगे। ट्रंप ने कहा कि ईरान की जौहरी तंसीबात को तबाह कर दिया। अमेरिका का मकसद ईरान की जौहरी अफसूदगी की सलाहियत को खत्म करना था। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने कहा है कि अमन ताकत से आ सकता है। ईरानी जौहरी तंसीबात पर हमले इसराइल से मुकम्मल राब्ते के साथ किए गए। सदर ट्रंप ने ऑपरेशन मुकम्मल होने के फौरी बाद उन्हें कॉल की। ईरान का जौहरी प्रोग्राम इसराइल के वजूद के लिए खतरा था।
सऊदी अरब का अमेरिका की जानिब से ईरानी जौहरी तंसीबात को निशाना बनाने पर तशवीश का इजहार। आलमी बरादरी से ऐसी हसास सूरत हाल के सियासी हल के लिए कोशिशें बढ़ाने पर जोर। इराक के ईरान की जौहरी तंसीबात पर अमरीकी हमलों की सख्त मजम्मत। कहा कि ईरान की जौहरी तंसीबात पर अमरीकी हमलों से मशरक़ वुस्ता में अमन व इस्तेहकाम को खतरा है। कतर ने कहा कि ईरान पर अमरीकी हमले अफसोसनाक हैं। ईरान की जौहरी तंसीबात पर हमलों के खित्ते और बैनुल-अक़वामी सतह पर तबाहकुन नताइज होंगे। ओमान की ईरान पर अमरीकी जारहियत की मसम्मत, कशीदगी कम करने के लिए फौरी इक़दाम का मुतालबा। कहा कि अमरीकी इक़दाम तनाज़े को मज़ीद वसी कर सकते हैं। जौहरी तंसीबात को निशाना बनाना जेनेवा कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी और नाकाबिले कबूल है। पुरअमन मकासद के लिए न्यूक्लियर प्रोग्राम्स का हक हर मुल्क को हासिल है। हमास की ईरान पर अमरीकी हमलों की शदीद मजम्मत। ईरान पर अमरीकी हमले को बैनुल-अक़वामी कानून की खुली खिलाफ वर्जी और आलमी अमन सलामती के लिए बराह रास्त खतरा करार दे दिया। कहा कि वहशियाना जारहियत कशीदगी में खतरनाक इजाफे का सबब बनेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की आज ईरानी सदर से टेलीफोनिक गुफ्तगू मुतवक्किल। ज़राए का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ और ईरानी सदर मौजूद पेशकियान के माबैन मौजूदा सूरत हाल पर बातचीत होगी। पाकिस्तान के ईरान की जौहरी तंसीबात पर अमरीकी हमलों की शदीद मसम्मत। अमरीकी हमले को इसराइली हमलों का तसलसल करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि ये हमले बैनुल-अक़वामी कानून की तमाम इक़दार की खिलाफ वर्जी हैं। ईरान को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत अपने दिफा का हक हासिल है। ईरान के खिलाफ जारी जारहियत से कशीदगी और तशद्दुद में बेमिसाल इजाफा हुआ है। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के उसूलों के मुताबिक बहरान का पुरअमन हल जरूरी है। मुज़ाकरात और सिफारतकारी ही खित्ते के मसाइल का वाहिद हल है। तनाज़े को फौरी खत्म किया जाना जरूरी है। मजीद कशीदगी पूरे खित्ते और दुनिया पर संगीन असरात डालेगी। शहरियों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना नागुज़ीर है। तमाम फ़रीक़ैन को बैनुल-अक़वामी कानून और इंसानी हमदर्दी के क़वानीन की पासदारी करनी चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने ईरान पर अमरीकी हमले को कशीदगी में खतरनाक इजाफा करार दे दिया। अंतोनियो गुतेरेस ने कहा कि इस बात का खतरा बढ़ता जा रहा है कि ये तनाज़ा तेजी से काबू से बाहर हो सकता है। आम शहरियों, खित्ते और दुनिया पर तबाहकुन असरात पड़ सकते हैं। आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता सिफारतकारी है। वाहिद उम्मीद अमन है। तनाज़े का कोई फौजी हल नहीं। नेटो हुक्काम का कहना है कि सूरत हाल को करीब से देख रहे हैं। बरतानवी वज़ीर आज़म सर किर स्टार्मर का ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस आने और कशीदगी के खात्मे के लिए सिफारती हल तलाश करने का पैगाम। कहा कि मशरक़ वुस्ता खित्ते में इस्तेहकाम तरजीह है। ईरान का जौहरी प्रोग्राम बैनुल-अक़वामी सलामती के लिए संगीन खतरा है। अमरीका ने इस खतरे को कम करने के लिए कार्रवाई की। ईरान को कभी भी जौहरी हथियार तैयार करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत ने ईरान के जौहरी और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को बैनुल-अक़वामी सलामती के लिए खतरा करार दे दिया। कशीदगी में कमी, बातचीत और सिफारतकारी पर जोर। न्यूजीलैंड के वज़ीर खारजा का अमरीकी हमलों पर तशवीश का इजहार। तमाम फ़रीक़ैन से मुज़ाकरात की तरफ वापस आने की अपील। कहा कि कशीदगी मज़ीद बढ़ाने से गुरेज किया जाए। सिफारतकारी फौजी कार्रवाई से बेहतर पायदार हल पेश करेगी। बरतानवी वज़ीर तिजारत ने कहा है कि ईरान पर हमले में हम शामिल नहीं थे, लेकिन हमें इत्तला थी। ईरान पर हमले के लिए अमरीका की जानिब से कोई दरख्वास्त नहीं की गई। फौजी असासों को खित्ते में मुंतकिल कर दिया है। मशरिक़ वस्ता में बरतानिया, अमरीका और नेटो के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कार्रवाई करेंगे। दिफाई तज्ज़ियाकार रेयर एडमिरल रिटायर्ड फैसल शाह ने कहा कि अमेरिका ने जंग का दायरा वसी कर दिया। अब जो कुछ होगा उसका जिम्मेदार अमेरिका को ठहराना चाहिए। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में रेयर एडमिरल रिटायर्ड फैसल शाह ने कहा कि ईरान के लिए आबनाए हुर्मुज़ बंद करना मुश्किल नहीं। ऐसा हुआ तो कई ममालिक की मईशत मुतासिर होगी, क्योंकि 30% तेल और 50% गैस इसी रास्ते से जाती है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद खान का कहना था कि ईरान पर अमेरिकी हमलों के बाद अमन कायम रखना इंतहाई मुश्किल हो गया है। ईरान खित्ते में अपनी प्रॉक्सीज के जरिए अमेरिकी असासों पर हमले कर सकता है। ईरान के जवाबी हमलों के बाद इसराइल दिफाई पोजीशन में चला गया था। ऐसी सूरत हाल में इसराइल अमेरिका को जंग में शामिल करने की कामयाब रहा।
दिफाई तज्जियाकार डॉक्टर कमर चीमा का कहना था कि ईरान पर हमले में अमरीका ने माजी के बरखिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा, IAEA और अमरीकी इंटेलिजेंस डायरेक्टर समेत पूरी आलमी बरादरी और क़वानीन को नजरअंदाज किया। ऐसा लगता है कि अमरीकी सदर सिफारतकारी को रास्ता नहीं देना चाहते। जियो से गुफ्तगू में मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद बोले, हूसियों ने आबाए बालल मंदल बंद करने की धमकी दी। जंग बढ़ती दिखाई दे रही है। अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान के लिए मुश्किलात बढ़ेंगी, क्योंकि बड़ी तादाद में मुहाजिरीन पाकिस्तान आ सकते हैं। साबिक सफीर जमील अहमद खान ने कहा कि अगर ईरान ने अमरीकी मफादात को निशाना बनाया तो इसके खित्ते पर शदीद असरात होंगे। OIC को आला सतह का वफ्द अमरीका भेजना चाहिए ताकि मामला खराब होने से बचाए जा सकें। बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी ने कहा है कि ईरान में अमरीकी हमलों के बाद ऑफ साइड ताबकारी की सतह में इजाफा नहीं हुआ। ईरानी जौहरी तंसीबात पर अमरीकी हमलों के बाद IAEA का बयान सामने आ गया। ईरान के आज़मी तवानाई इदारे का कहना है कि अमरीकी हमलों के बाद ताबकारी के शवाहिद नहीं मिले। तीनों तंसीबात के करीब आबादी को खतरात नहीं। एटमी इदारे का जौहरी सरगर्मियाँ जारी रखने का ऐलान। जौहरी तंसीबात पर हमले बैनुल-अक़वामी क़वानीन और NPT की खिलाफ वर्जी करार देते हुए कहा कि अमरीकी हमले कई रोज से जारी इसराइली हमलों का तसलसल है। IAEA उन पर खामोश और मुमकिना तौर पर शरीक जुर्म है। ईरानी अहदेदार का कहना है कि अमरीकी हमले से पहले जौहरी तंसीबात को खाली कराया गया था। निशाना बनाई गई साइट्स में कोई मवाद मौजूद नहीं था जो इखराज का बाइस बनता। अमेरिका ने ईरान की तंसीबात पर हमलों के लिए GBU-57 बंकर बस्टर बॉम्ब इस्तेमाल किए। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक 30,000 पाउंड वजनी मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर में 6,000 पाउंड धमाका खेज मवाद मौजूद होता है। ये बॉम्ब इंतहाई महफूज तंसीबात तक पहुँचने और इन्हें तबाह करने के लिए डिजाइन किया गया है। ईरान के सूबे कुम में पहाड़ों के नीचे वाक़ फर्दो ईरान का यूरेनियम अफजूदगी का अहम तरीन मरकज है। नेतन्स में भी यूरेनियम अफजूदगी का मरकज निशाना बनाया गया। इस्फहान के करीब जो तंसीबात अमरीकी बमबारी का हदफ थी, उनके बारे में ख्याल किया जाता है कि यहाँ अफजूदा यूरेनियम जखीरा की गई है। And I want to tell you something, that the only entity that can take this country to war is the U.S. Congress. The President does not have the right. No more wars, मजीद जंगे नहीं। ईरान के खिलाफ महाज जंग खोलने पर अमरीकी अवाम का शदीद रद्द-ए-अमल। ओक्लाहोमा में एक रैली के दौरान अमरीकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने जब ईरान पर हमले से मुतअल्लिक़ अमरीकी सदर का बयान पढ़कर सुनाया तो मजमे मौजूद अवाम ने सख्त गम और गुस्से का इज़हार किया। जंग की मुखालिफत में नारे लगाए। डेमोक्रेट सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने ईरान की जौहरी तंसीबात पर अमरीकी हमलों को आइन की पामाली करार दिया। कहा कि जंग की इजाज़त देने का इख्तियार सिर्फ कांग्रेस के पास है। अमरीकी सदर ये फैसला नहीं कर सकते। कांग्रेस की इजाजत के बगैर ईरान पर हमलों पर अमेरिकी सेनेटर सदर ट्रंप पर बरस पड़े। सेनेटर अलेक्जेंडर कोर्ट्स ने कहा है कि सदर ट्रंप के खिलाफ मवाक़से का वाज़ेह केस बनता है। रिपब्लिकन सेनेटर शॉन कास्टर ने कहा है कि कांग्रेस स्पीकर में दम है तो कांग्रेस के जंग से मुताल्लिक़ इख्तियार का तहफ़्फ़ुज़ करें। किसी अमेरिकी सदर को ऐसे मुल्क पर हमले का इख्तियार नहीं जो फौरी खतरा ना हो। साबिक़ वज़ीर मुशाहिद हुसैन सैयद का कहना है कि ईरान की जौहरी साइट्स पर अमरीकी हमले सख्त काबिल मज़म्मत हैं। यह धर्मी जारहियत और जंगी जुर्म हैं। ये 2003 में इराक जंग की तरह झूठ पर मबनी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप धोखाधड़ी और फरेब का मुजाहिरा करते हुए नई जंगें न शुरू करने के वादे से मुकर गए। पाकिस्तान ईरान के साथ खड़ा है।
साबिक वफाकी वजीर असद उमर का कहना है कि 2 जौहरी ताकतें मिलकर एक गैर जौहरी ताकत पर हमलावर हैं। इसराइल ने NPT पर दस्तखत नहीं किए, जिसके तहत वो अपनी जौहरी तंसीबात के मुआयने की इजाज़त नहीं देता। अमरीका जौहरी हथियार इस्तेमाल करने वाला वाहिद मुल्क है। IAEA और अमरीकी इंटेलिजेंस के मुताबिक ईरान जौहरी हथियार नहीं बना रहा। ये आलमी क़वानीन और इंसाफ के किसी भी उसूल की कितनी मुकम्मल और सरासर खिलाफ वर्जी है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान की ईरान पर अमरीकी हमले की मजम्मत। कहा इसराइली पराही के बाद अब अमरीका खुलकर सामने आ गया है। अमरीकी जारहियत दुनिया का अमन तबाह करने के मुतरादिफ है। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर महकमा दाखिला में डायरेक्टोरेट ऑफ मॉनिटरिंग सेल कायम। महकमा जेल, सिविल डिफेंस, हाईवे पेट्रोल और सिक्योरिटी कंपनी से मुतालिक शिकायत के लिए हेल्पलाइन कायम। पंजाब की शाहराहों पर दौरान सफ़र मदद या रहनुमाई के लिए पंजाब हाईवे पेट्रोल से राब्ते का सिस्टम भी कायम। मुसाफिर गाड़ी की खराबी, डकैती या किसी भी हंगामी सूरत हाल में मदद के लिए 1124 कॉल कर सकते हैं। जेल के अमले के नामुनासिब रवैये और रिश्वत तलब करने पर भी 1124 पर शिकायत की जा सकती है। सिक्योरिटी गार्ड को मुकर्ररा उजरत से कम तनख्वाह मिलने की शिकायत पर सिक्योरिटी कंपनी के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। और खुजदार में कबायली रहनुमा मीर अताउर रहमान मैंगल एक हमले में कातिल कर दिए गए, बेटा जख्मी। लेवी हुकाम के मुताबिक तहसील भट के इलाके आड़जी में अताउर रहमान मैंगल पर फायरिंग की गई। मीर अताउर रहमान मैंगल साबिक निगरान वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर मोहम्मद नसीर मैंगल के बड़े बेटे थे। मेरे अब्बा की गिरो उठो ट्राई, फिर से गिरो उठो ट्राई। धोए इन गहरे सख्त दागों के लिए है नया सर्फ एक्सेल डीप एक्शन टेक्नोलॉजी के साथ। कपड़े की अंदरूनी लेयर से पूरी तरह खींच निकाले तो दागों से क्या डरना, सर्फ एक्सेल है ना। अस्सलामुअलैकुम, जियो न्यूज के साथ मैं हूं वजीह सानी। मैं हूं पाकीज़ा जाहिद। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे एक ब्रेक के बाद। कोलगेट पेश करता है क्रंची चोको चिप्स और च्यूई ड्राई फ्रूट्स की प्लेफुल कॉम्बिनेशन से भरी आपके फेवरेट कुकीज पे 50% लेस कैविटीज का टेम्पटिंग ऑफर। पर ये ऑफर सिर्फ रात को ब्रश करने वालों के लिए। कैविटीज के चांसेस 50% तक कम करो, सोने से पहले ब्रश करो। कोलगेट की जानिब से आवाम के मफाद में जारी किया गया है। कुछ रिश्ते जिनके होने से हर लम्हा सेलिब्रेशन में बदल जाता है। हैप्पी बर्थडे भैया। इसीलिए तो हम इन्हें गुड फॉरएवर कंपेनियन कहते हैं। GFC, आपका गुड फॉरएवर कंपेनियन। GFC, बेहतरीन पे यकीन। D3 AC हो या D1, सब आपके बजट में। इको स्टार, एक्स्ट्रा फास्ट, एक्स्ट्रा कूल, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो हो जाए पाकिस्तान के नाम टपाल दानेदार का एक और कप। अंकल सोच ले। हाँ सोच लिया। निपॉन पेंट है, सब महंगा भी नहीं है, जेब पर हल्का, सालों साल चलता। निपॉन पेंट लग गया तो लग गया। निपॉन पेंट, एशिया's #1 पेंट ब्रांड। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि अमेरिका ने ईरान की जौहरी तंसीबात पर हमला करके बड़ी रेड लाइन क्रॉस की है। जवाब देने का हक महफूज रखते हैं और जवाब जरूर देंगे। हमारे जवाब का इंतजार करें। इस्तांबुल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि अमेरिका अपनी जारहियत के नताइज का जिम्मेदार है। अक़वाम मुत्तहिदा के क़वानीन के मुताबिक ईरान जवाबी इक़दामात का हक महफूज रखता है। तेहरान अपनी सलामती, मफादात और लोगों के दिफा के लिए तमाम इख्तियारात महफूज रखता है। ईरानी मुसल्लह अफ़वाज मुकम्मल अलर्ट हैं। ईरान ने